थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड थोड़े से काम भी रहते हैं बाकी के, सो दैट वाज द रीज़न. लेट मी जस्ट लाइक गेट ऑल द थिंग्स विथ मी. तो व्हाट्सएप का नंबर आप सभी को पता है, लाइक इट्स 8975172145. वहाँ पे बेसिकली एक चैटबॉट है एंड व्हाट इट डज, सो 24 आवर्स बाय 7 ऑल डेज, वीक डेज और वीकेंड्स में भी, एंड ईच एंड एवरी मोमेंट इट्स राइट देयर. तो उस पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और उसको फॉलो करने के बाद में आपको सिंपली रिस्पॉन्सेस, आपके प्रेफरेंसेस जो है उसके बेसिस के ऊपर आपको सामने की चीज़ें भी मिल जाती है वहाँ पे. ओके. तो जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है बीइंग अ नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ग्रुप, लाइक मे लाइक इट मे बी लाइक नीट MDS 25 हो सकता है, नेक्स्ट डेंटल PSC होती है, एनहांसमेंट कोर्सेज सेशंस होते हैं, वो चीज़ें भी होती है बहुत सी हमारी शुरू रहती है बेसिकली. तो थोड़ा सा मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ. स्पेशल सेंसेस फिजियो के हमने कवर करे थे, फिजियो के टॉपिक्स आज भी हमने कवर करे आणि बऱ्यापैकी आता 20-22 दिवस जेवढे काही दिवस राहिलेले आहेत, 20-22 पण नाही, आजचा सोडून होता म्हणजे एकूण 18 दिवस पकडा तसं म्हटलं तर. टोटल फोकस जो असणार आहे सगळा तो असणार आहे या गोष्टींवरती. So MCQ की बुक्स की क्विक रीडिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल. सो होपफुली अब से थोड़ा सा लेट नाइट का जो थोड़ा सा स्टडी होता है वो ज़्यादा करेंगे. अर्ली मॉर्निंग भी उठना है जल्दी. ओके. तो कैल्सिफिकेशन का स्टार्ट कर लेते हो. ओके. कैल्सिफिकेशन एंड द इरप्शन ऑफ टीथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जिसमें मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट लाइक फर्स्ट मोलर, तो कैल्सिफिकेशन जो होता है उसका विच बिगिंस एट द बर्थ. और जो प्राइमरी डेंटिशन का बेसिकली इनिशिएशन होता है, ठीक है, तो दैट अकर्स अराउंड लाइक 4 months इन द यूटेरो. हाई मैक masculine. Hello. So hello everyone. Hello Mac 468L. I don't know like what exactly that means, but like it's a very strange name and it's a very good name. So hello. So hopefully you are from India ऐसा लगता है मुझे. And if you are not part of let's say India, तो just comment कि आप कहाँ से हो, so that I can get idea कि where my YouTube live is going. So welcome. Okay, yes, that's good. Okay, so it's almost right now 9:11 p.m. here, and after finishing the whole day, we are again just live again to have a quick revision kind of thing. We do have a particular examination, and we do run a non-profit community group, especially for the dentist and every aspirant. I know, like in US, uh, dentistry is quite let's say a different thing from like India. It's like a developed country, but like let it be. Uh, so welcome to the YouTube live. सो डेंटिशन होता है बेसिकली, उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप्स. तो वी विल जस्ट स्टार्ट दैट. जिसमें टाइफोडेंट और वो चीज़ होती है. वी विल बी हैविंग ओनली 30-40 minutes राइट नाउ.
So write about tooth टाइप जिसमें आता है वो हाइफो हेट्रो. ओके. सो होमो एंड हेट्रोडोन डेंटिशन होता है बेसिकली. सो टीथ दे वेरी इन शेप साइज एंड फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिस एज वेल एंड देयर डाइटरी नीड्स. जैसे हमने देखा है कि हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस, these are the different types of, let's say, animals we can categorize based on the type of diet they prefer, and based on that homodont and heterodont dentition is there. Okay, so what is that homodont dentition? So all teeth are of the same shape and function, okay, throughout the mouth. So this type of dentition is mostly found in the lower vertebrates, such as fish, amphibians, and even the reptiles. Okay. So teeth are uniform in shape and even size. छोटे बड़े, bigger, smaller ऐसे नहीं होते. Even the shape is just like same. Triangular है तो triangular ही रहेंगे, conical रहेगा तो conical ही रहेगा. And they are primarily seen in the non-mammalian species. Okay. And they are often replaced continuously, that is polyphyodont. So once a teeth is lost, or once a tooth is lost, immediately it will be just like replaced within few time. जैसे शार्क में होता है कि कंटिन्यूसली, जस्ट लाइक लेट्स से मशीन गन में जैसे बुलेट्स होती है, तो एक खाली हो गई, एक स्पेस एक मिसिंग हो गया, तो लेटर ऑन दूसरा वाला वहाँ पे आ जाएगा. सो इट्स नोन एज लाइक पॉलीफायोडोंट. ओके. टीथ रिप्लेसमेंट नेचुरली होती है एंड कंटिन्यूसली भी होती है. ओके. तो शार्क्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स एंड एम्फीबियंस, दे हैव होमोडोंट dentition, while heterodont, as the name suggests, so in this dentition teeth are differentiated into various types, so such as specific function होते हैं like cutting, tearing and grinding. So primarily seen in the mammals, so including humans. सो जैसे पिछला वाला टूथ था तो साइज एंड शेप सेम ही था. इसमें ऑब्वियसली साइज विल बी डिफरेंट, shape will be different, and function obviously will be different. So incisors, they are chisel shaped teeth for cutting and biting the food, denoted by I, and canines, denoted by the C. So they are the sharp and pointed teeth for the tearing and holding. Okay. तो टू टेयर, टू होल्ड, कैनाइंस आर यूज्ड, और सिंपली बाइट लेना या कट करने के लिए इंसाइड्स आर यूज्ड. सो प्रीमोलर्स होते हैं सिंपली ब्रॉड एंड फ्लैट टाइप के टीथ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग एंड द क्रशिंग फूड बिफोर इट रीचेस द पोस्टीरियर पार्ट. मोलर्स जहाँ पे है कि जिनका थोड़ा सा साइज लार्जर साइज का होता है एंड फंक्शंस इज द सेम, ग्राइंडिंग एंड द च्यूइंग फूड थोरोली बिफोर लाइक इट एंटर्स इनटू द next part of the GIT. So characteristic of heterodont dentition, so they are specialized teeth based on the function, found in the mammals, humans, carnivorous and even herbivorous be. Okay. And teeth are usually diphodont, that it means it appears, they appear in two sets, that is deciduous and permanent. So these type of heterodont dentitions, they have diphodont kind of characteristic, while homodont dentition, they have polyphyodont type of characteristic. So humans, dogs, cats, cows and even other mammals, they have heterodont dentition. Okay. So based on this topic again, 10 MCQs will be posted on our Telegram channel. So kindly do check that as well. Quick Dental is the name, and everything which is related to the dental exams, that is there. So we are just like having that particular non-profit community group on Telegram since 2022,
And just because there was a, let's say, advertisement for the dental surgeon in the state of the Maharashtra, almost 289 posts were published. So since then we are just like conducting these type of activities, just to interact, and to have something to share on a platform. So YouTube recently we started. Initially we were just like engaging our community with only text based messages or simply audio platforms. जो भी कुछ होते थे हम उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे थे. राइट नाउ वी आर जस्ट लाइक using this video platform. So yes, we do need lot of people, lot of volunteers who can simply join our team. So welcome everybody. So after that, so the type of, let's say not type but amount of time required, uh, like by the erupting premolars to move through the 1 millimeter of bone. Okay. So अगर bite wing radiograph is taken, okay, mixed dentition है and bite wing radiograph is taken to check out whether like it's going to be like erupting or not or something, like कुछ other treatments available करानी पड़ेगी. So for that analysis, bone length is measured. Okay, after taking a bite wing. Okay. So the question was ki how much time it will take to move through 1 mm of measured bone. Okay, on the bite wing radiographs. So it will almost take 4 to 5 months to move through 1 millimeter of bone. तो अगर 2 millimeter है तो it will take surely 8 to 10 months. और 3 mm रहेगा तो 12 to 15 months it will take a premolar. And after the eruption of teeth, almost 2 to 3 years will be, let's say, they will be invested for the completion till the root formation. After that, next topic is occlusion. थोड़ा सा important है ये पे वाला भी. So let's start with the group function occlusion. Okay. I think this topic is not already discussed. Group function occlusion. Okay. कैनाइन गाइडेड शायद कवर किया था हमने probably. So group function occlusion refers to a type of a occlusion scheme where multiple teeth on the working side, usually the premolars and molars, they make contact during the lateral mandibular movement, while the non-working side remains discluded. Okay. So this type of occlusion distributes the occlusal forces across several teeth. Okay. So it can reduce the stress on the individual teeth. So during lateral movements, working side is there, non-working side is there. तो नॉन वर्किंग साइड जो होती है बेसिकली उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा ना आए, दैट्स वाई लाइक वो डिस्क्लूड ऑक्लूजन से करनी पड़ती है. वाइल वर्किंग साइड में यस कॉन्टैक्ट्स विल बी देयर, बट वो स्टडी करना है कि लाइक हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट दैट थिंग. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप फंक्शन, सबसे पहले एक चीज़, तो मल्टीपल टूथ कॉन्टैक्ट ऑन द वर्किंग साइड. So the buccal cusp of the premolars and molars, they make simultaneous contact during the lateral movement, okay, on the working side. While canine along with the premolars and molars, they share the occlusal load, okay, multiple tooth contact hota hai. While disclusion on the non-working side, so no contact occurs on the opposite side to prevent any harmful occlusal forces. ठीक है, interference नहीं होना चाहिए while having a lateral mandibular movement. So force, occlusal forces, they are spread across the multiple teeth. So they prevent excessive wear and overloading on a single tooth. And it's a alternative to the canine guidance. So in case where the canines are missing,
or even they are compromised. So group function serves as a alternative to the canine guided occlusion. So basically it is used in the prosthodontics whenever like full mouth rehabilitations are there. Okay. So it also minimizes the risk of occlusal trauma, provides stability for patients with the missing or worn down canines. तो बहुत बार ऐसे होता है कि कैनाइन वन साइडेड का बिल्कुल लैटरल की तरह ही दिखता है ऑलमोस्ट, जो कस्प होता है उसका, कस्प इन द सेंस जो पॉइंटेड टिप होती है वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है. सो एट दैट टाइम दिस ग्रुप फंक्शन हेल्प्स. ओके. So comparison between group function and canine guidance, let's check. So teeth involved in the lateral movement होते हैं canine guided occlusions में, simply canine include होता है, while group function में multiple posterior teeth they are, let's say they are in function on the working side. While load distribution in the canine guided occlusion, it is concentrated on the canines. Okay. While in group function occlusion, the load distribution is shared across the several teeth. But yes, non-working side contact दोनों में अवॉइड होते हैं इन ग्रुप फंक्शन एज वेल इन कैनन गाइडेड ऑक्लूजन, दोनों में ऑन नॉन वर्किंग साइड एज सच देर इज नो कॉन्टैक्ट. ओके. बट येस, ग्रुप फंक्शन जो ऑक्लूजन होता है इट इज प्रीफर्ड विद अ पेशेंट विथ मिसिंग और इवन वीक कैनाइंस, और अगर स्ट्रॉन्ग कैनाइन हो तो yes, canine guided occlusions is there. And what about the risk of wear and tear? So in group function occlusion, posterior teeth wear over time, while canine guided occlusion में बिल्कुल भी नहीं होता या कम होता है, क्योंकि कैनाइन पे ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर टीथ दे आर नॉट गोइंग टू बी लेट्स से ट्रीटेड with canine guided occlusion. So based on this topic again we will be having multiple MCQs. So just wait for a moment, we will be back.
So let's eat something. And while eating, we can also just like we can read also few topics. ज़्यादा भूख नहीं लगी है, but simply to have a good sleep, you need something in your stomach. वरना रात भर नींद नहीं आती. So enjoy if you are having the same thing. So Bennett angle and Bennett movement. Okay, that is a term which is related to this only. Okay. So Bennett angle, the angle formed between the sagittal plane and the pathway of the non-working condyle, that is balancing side condyle, as it moves forward and inward during the lateral mandibular movement. So movement of the balancing side condyle non-working but in the forward and the inward direction in the sagittal plane. Okay. So these are the MCQs. What is the movement? So it's forward, inward, and in which plane the angle is formed? So in sagittal plane. Okay. So basically, anatomy and the movements related to the Bennett angle. So Bennett movement, basically. So the slight lateral shift of the mandible due to the movement of the working condyle. So that is known as Bennett movement. And the working side condyles rotates while the non-working side condyle moves forward, downward, and inward. Okay. So there is a rotation of working side condyle. So average value of this Bennett angle is normally 7 degrees to 15 degrees, but it can vary among individuals. So 17 to 15 degrees, that is the normal value. MCQ इस पे पूछा जाता है, पूछा गया है पहले भी. सो एनाटॉमिक वर्सेस नॉन एनाटॉमिक टीथ वो भी कवर कर लेते हैं. So anatomic teeth, these are the artificial teeth used in the prosthodontics that closely resemble the natural shape and the contours of the human teeth. Okay. So they have well-defined cusps, grooves, and they are designed to provide a proper occlusal function along with the masticatory efficiencies. Okay. तो ऑक्लूजल फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए इन द आर्टिफिशियल डेंटिशन एज वेल. Along with that, masticatory efficiency should be good. So what are the different characteristic of this anatomic teeth? So cusp angulation जैसे like cusp and fossas और बाकी की चीज़ें होती है,
तो टिपिकली 30 डिग्री एंगुलेशन होता है और मोर, सो इट मिमिक्स द नेचुरल डेंटिशन and it is suitable for like persons individuals who are having a balanced type of occlusion. Okay, so patients with good neuromuscular control, complete dentures for the younger or even like well adapted individuals, old भी हुए तो, बट येस बेटर एस्थेटिक्स और फंक्शंस जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. एनाटॉमिक टीथ की बेसिक कस्प एंगुलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 30 डिग्रीज और टिपिकली मोर. While non-anatomic teeth, so these are the artificial teeth again with a flat occlusal surface with no prominent cusp. So they are basically designed to provide ease of function, especially patients with compromised neuromuscular control. Okay. So as such, minimal or no cusp angulation is there. It also reduces the lateral forces. So stability होती है resorbed ridges की. तो अगर रिच बहुत ज़्यादा रिजॉर्ब्ड है तो इन दोज केसेस एनाटोमिक टीथ विल नॉट हेल्प इन लाइक स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन, बट येस नॉन एनाटोमिक टीथ विथ फ्लैट occlusal table, it will aid in the retention and the stability. So indications: elderly patients with poor neuromuscular control, patient with highly resorbed ridges, or even cases which require monoclone occlusion. फॉर एग्जाम्पल लिंगोलाइज्ड ऑक्लूजर अगर चाहिए तो भी इसमें नॉन एनाटॉमिक टीथ दे आर यूज्ड. तो स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो नॉन एनाटॉमिक टीथ दे विल बी मोर स्टेबल ऑन द रिजॉर्ब्ड रिच. और स्टेबिलिटी अच्छी होती है एनाटॉमिक टीथ की, बट इन केस ऑफ लेस रिजॉर्ब्ड रिजेस. ओके. And adjustments, they are more complex in the anatomic teeth, while non-anatomic teeth as such उसमें occlusion कोई नहीं होता है. तो it's easier to just like set those teeth non-anatomic. So thanks for watching. Kindly do check our Telegram channel as well. अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं कहा कि कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे. सी यू सून. गुड बाय. टेक केयर.